For nearly 200 years, Britain ruled over India's 380 million people. India was the centerpiece of Britain's empire, a source of money and power. For decades, Indians had fought to rid themselves of British rule. The independence movement had been kept in check by ruthless military force. But by 1946, everything had changed. World War II had left Britain bankrupt. But India's independence leaders were divided over what should happen when Britain left. The Indian National Congress, under its leaders Pandit Nehru and Mahatma Gandhi, demanded a single state where all religions would live side by side. But many Muslims feared living under a Hindu majority. March 1946, a British government delegation, the Cabinet Mission, arrived to negotiate between Congress and the League. This was supposed to be the breakthrough conference, where a deal would be struck leading to an independent India. August 1947. The British are quitting India nearly 200 years after they took power. One of the largest, most ethnically diverse nations in the world has been divided. One country will now become two, India and Pakistan. As a British barrister draws a line on a map, a once peaceful land implodes. People are forced out of the villages they have lived in for generations. 15 million scramble to be on the right side of the new border. At least 1 million die in the process. And this huge mass of humanity just moving along, barefooted, no food, thirsty. It was a terrible sight, terrible sight. Communities that have lived together for centuries turn on each other in one of the worst communal massacres of the 20th century. It was so senseless, so utterly senseless. And yet, there's nothing you can do about it. Britain, the once great colonial power, looks on as India burns.
एक दिन उन्होंने लगा ये कि यहाँ पे पूरा डाल दिया पेट्रोल लगाया तो लगाई तीली। एक लड़का उन्हें रात को लाया था, लटकाया उसको लोहे की तार से लटकाया। मुताबिक तकरीबन रात के 3 बजे हैं तो उसने मुझे आवाज सुनी, हाथ वहीं रह गए, वो नीचे गए। दिल को धड़क रहा है? नहीं। और नहीं क्या दिल धड़क रहा है भाई? ये क्यों धड़क रहा है? क्या करता है? कोई तंजीम में है तुम? नहीं है, ये दुकानदार। तुम झूठ बोल रहा है। इसको ऐसा करो, अलग रखो इसको, इसमें कुछ शक है थोड़ा सा, इसका सवाल जवाब होगा। पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं? अगर तो इंडियंस ये डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो कोएग्जिस्ट नहीं करते, तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं, इंडिया में मौजूद तमाम इंसर्जेंसी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करके इंडिया को डिसमेंबर कर दे, तोड़ के छोटा छोटा कर दे। Not security forces, they are insecurity. Their presence in Kashmir is insecurity for us. हिंदुस्तानी सरकार को ये जान लेना चाहिए, कश्मीरी आवाम जब तक जिंदा है, हम आप इनको यहाँ से निकाल देंगे। At one level, they had very cordial relations. Our Muslim neighbors were very good. They helped us, we helped them. But see, Hindus had a curious inhibitions. My mother's attitude, she didn't allow any Muslim to enter her kitchen. Any cooked thing from a Muslim home was not allowed to enter the kitchen. When she was eating, she would not allow her Muslim neighbors, the lady, to touch her. So such inhibitions and customs, they kept us apart. In Lahore's old city, Muslims were forbidden from drinking from the same taps as Hindus. Zahur Uddin, a Muslim, was a champion wrestler from the old city. बाकी असी लोग जाके लगले जाते पानी पींदे सा ना, वो छबील को पानी गिलास ही कुछ सान नहीं सन पियाते, वो इस तरह पानी भी नहीं सन पियाते। उन्होंने एक एडी एडी लम्मी नौजल रखी सी लोहे की, वो इतों फड़ते सन तो जिथे तुम बैठे हो ना उतों तक नौजल होंगी, इतों पानी पाता ही तो असी इस तरह पानी पींदे सा। वो छूत तो भी सानू छूत समझदा सी हिंदू। अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे
तो आप बता दो, आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर। शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं। भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया। ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले। नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ों पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा। और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज Hindus were concentrated in central and southern India, Muslims in Bengal and the northwest. A British commission divided the territory into majority Muslim Pakistan and majority Hindu India. In the chaos that followed partition, 15 million people fled across the new borders and 500,000 died in rioting. 4 border regions saw the worst of it: Sindh, Bengal, Punjab, and Jammu and Kashmir. Among India's 565 princely states, only Jammu and Kashmir had a Hindu Maharaja ruling over a majority Muslim population. India claimed the Maharaja decided to join India. Pakistan disputed this. In October, Pashtuns from Pakistan's northwest frontier province invaded Kashmir with the support of Pakistan's government. In October of 1947, the Maharaja left Srinagar. Indian troops were airlifted in, but were ill-prepared for the cold and altitude. Pakistan responded with its own campaign, and India approached the United Nations to broker a ceasefire, which went into effect on January 1st, 1949, establishing a line of control, but no final border. In 1962, China attacked India in the Aksai Chin region of Kashmir, easily defeating India's poorly equipped Himalayan troops. China retains control of the Aksai Chin today. 3 years later, encouraged by China's success, Pakistan sent troops across the line of control dressed as Kashmiri locals. The fighting proved brief and inconclusive. On September 22nd, both sides agreed to a UN-backed ceasefire. Another brief war broke out over East Pakistan in 1971, this one conclusive. East Pakistan seceded, 10 million refugees streamed into West Bengal, and with India's help, Bangladesh was born. In 1999, after both India and Pakistan had successfully tested nuclear weapons, full-scale war was barely avoided when Pakistan tried to seize the Kargil region of Indian-controlled Kashmir. At one time,
an average of one Pakistani soldier every 4 days and one Indian soldier every other day died at the Siachen Glacier, and the terrorist attacks in Mumbai in November 2008 were reportedly planned by senior members of Lashkar-e-Toiba, which... Bangalore is the reputed city of the IT and aerospace hub in India. A developing and opulent city on the surface, but its underbelly reveals a different picture. As with the other major cities in India, it has its fair share of slums. The number of slums in Bangalore has reached 778, with a number, as per the official record of the BBMPs, KSCB and BWSSB, 11% of Bangalore's 8 million population reside in slums. And many slum dwellers develop a higher risk of catching life-threatening diseases. Diseases that include dysentery, typhoid, jaundice, which are contracted through the lack of or no sanitation whatsoever. According to a UN survey, there are more mobile phone users than toilets in India. So when you now look upon a typical dwelling, one would see a different picture, because each of these houses is in an area of 4,000 households, of which each home has one room, one kitchen, and an average of 7 occupants, amounting to a population of 30,000. Welcome to India. Over 1 in 6 in the world live here. And to make ends meet, more of us are moving to the city than anywhere else on earth. We're resourceful, steal jobs, and highly resilient. It's just as well. We need all our ingenuity to create a space we can call home. Unlike Rajesh's upbringing in a middle-class apartment, Savita grew up in illegal settlements. मोटे-मोटे नंतर टाका पहिला मार्के टाका नको त्याच्या खाली रश्यात टाका करा माझी चप्पल पण तुझली रे The moneylender approaches on his daily round. तेरे को बोला था ना भाड़े का शर्ट निकाल के रख देना और लॉन्ड्री में से लाके देना देना तू पैसे वो देना उसमें से देते ना फिर आज अरे मैं क्या बोल रहा हूँ वो दे दे मैं बाकी का जिस दिन ला रहा ना वो उस दिन तुरंत ले ले मैं बता देना पैसा देता है बात करता है फिर तेरे को फोन करके बता देता है डेट बुलडोजर वाला भागो बाबू से भागो It's feeling very worried that what will happen now. If anybody goes and rush them, then they remove sticks and beat at them very hardly. ए निकालो चल Just don't show the camera. Otherwise cops will catch you. उधर का नहीं ऊपर चढ़ा रहा है क्या चंदू था नहीं चंदू को परेशान चंदू गई ना चंदू घर में बाबू ने बनाओ थोड़ा रूम काली से तो मामी को छुट्टी को निकाली बना दी चाहिए परेशान थी जैसे कचड़वा भरल है हाँ तो सही है चैन वाला रहता तो सब ले देते
In just 2 hours, the houses of 40 families have been reduced to a jumbled mess. Kale, in the jewelry district, is again using the brief hours of quiet in the middle of the night. काम भी अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। क्या बोलेगा, काम करना है तो खराब है, नोट अच्छे कमाते हैं तो अच्छा है। He's confident he's found a buyer who will pay properly for the sludge. अंदर से इन्हें आवाज आ रही है बिल्ली की। बाड़ी लगा हुआ है, अब जो कल एक लगा वो निकलेगा, वो अलग निकलेगा, परसों हम निकलेंगे, उसके बाद काम एंड करेंगे, हमारा काम शेष हो जाएगा। ये चेला है हमारा, चेला गुरु हमें इसके, जो मट्टी ज्यादा काला होगा तो उसमें माल निकलता है। हमें पूरा 30 बस्ता करना है आज में, 30 हो जाए 25 हो जाए भर देंगे आज में, 4 बजे तक अपना पूरा काम खत्म कर देंगे। Kale has a new plan to strengthen his bartering position. Instead of letting the buyer come to him, he'll take the sludge to the buyer's own turf. 3 ड्रिलिंग में 30 बस्ता निकाला हम, हमारा काम खत्म हो गया। अब जा रहा हम सीधा टैक्सी लेने, टैक्सी लेके जाएगा गंगा घाट माल डालने के लिए, और सुबह में 10 बजे करीब हम माल बेचने आएगा। अभी डाल के आएगा 1 घंटे में, आधा 1 घंटे में। जल्दी जल्दी हम इसमाने कर दिया कि हम जल्दी माल लदा के यहाँ से ले आएगा, क्योंकि वो शिवपुर से निकल जाएगा। इसमाने टैक्सी हम जल्दी करा, टैक्सी करके अब सीधा माल लेके जाएगा। अरे तो माटी है ना, 15 बजे देखने से नहीं ना होगा, तो उसमें आएगा ही नहीं, उतना गाड़ी पूरा बढ़ जाएगा, जाएगा कैसे? अरे तो कुछ एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, पैसे से क्या नहीं होता आजकल। ठीक है बेटी, आना लड़का, आओ एक चप्पल पहन लूं। चलो भाई। Now, we might be the world's largest ship recycler, but if you think this appetite for the fruits of recycling is a one-way deal, my friend, think again. Next time you put on your lipstick or lather up with soap, bear in mind that some of the ingredients may have started life somewhere like this, Muhammad Ashiq's fat processing workshop. चर्बीटा जाचे तो पेटेर चर्बी ओटा गालानो होच्छे, आग में लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी कमाई लेते हैं। His raw material is prepared by a team of cutters. It's beef suet, the fat from around the kidneys and loins, which he renders down at high temperature. 3 ঘন্টা চামচের সঙ্গে কড়াইয়ের সঙ্গে লড়তে হবে, লড়ে মালটা বার করতে হবে। 10 বছর ছিলাম, 10 বছরে আমি নানান ব্যবসা করেছি, হ্যাঁ অন্য কোনো ব্যবসা করেছি। আমি নিজে লাইফের মধ্যে স্ক্রিম বিক্রি করলাম, স্যালাডার হাউসে চাকরি করলাম, রিক্সাদার ব্যবসা করলাম। বলতে গেলে কি আমি কোনো কাজ দিয়ে উপর জাহাজ চালাইনি, না তো তলার সব কাজ জানি। મારી બેબી અરુણાને બાદથી 5 વર્ષ પહેલા લગ્ન કર્યા હતા.
લગ્ન ગાળા દરમિયાન 2 વર્ષનો સમય સારો હતો, બરાબર. પછી લોકો આણાનું પછી કે જલ્દી આણું કરો બેબીનું. જ્યારે મેં આણું મજૂરી કામ કરીને આણું કર્યું. મેણા ટોણા તો કાયમ દી ઉગી ને ત્યારથી એમને મેણા ટોણા મારવાનું શરૂ થઈ જાય કે તું કઈ લાવી નથી, તારા બાપા કઈ લાવી નથી દીધું. મારો છોકરો પેટમાં હતો 6ઠો મહિનો જતો હતો ત્યારે મારા પતિએ મને વાળ ખેંચીને ઘરમાંથી તે બહાર ટાંકી છે ને ત્યાં સુધી ઢસડી લાવીને મને પેટમાં 2 ફાટું મારી હતી. તો એ તો કે પુરુષો તો હોય જ એવા કે એમને તો કે આપણા ઉપર હાથ જ ઉપાડે, એમને મારે તો આપણે માર ખાઈ લેવાની, અરે ઘર બાંધી લેવાનું, કે એવું તો ચાલે રાખે. સાસુ સસરા, મારા દેર અને મારા પતિ ચારેય ભેગા થઈને મને તારીખ 16/8/2007 ના રોજ મને સાંજના 6 વાગ્યાના સુમારે સળગતા લાકડાથી ડામ આપ્યો. અને એ લોકોએ નક્કી કર્યું હતું આને હવે મારી જ નાખવી છે, અને મારી નાખશું અને પછી એનો મામલો છે ને આત્મહત્યામાં ખપાઈ દઈશું. પછી મેં ફોન કરી મારા પપ્પા અને મારા મમ્મીને તાબડતોબ તેડાવ્યો કે મને લઈ જાઓ, નહીં આ લોકો મને જાનથી મારી નાખશે. મારું જાનનું જોખમ છે અહીંયા રહેવામાં, હવે સાર નથી. મારા સસરા, મારા મોટા સસરા ની બધા મારા પપ્પાને મારા મમ્મીને બધાને મારવા લીધા કે તમે શું આવ્યો છે. મારા મોટા સસરા ધાર્યું લઈને આવેલા મારવા. તમારા માતા પિતા શું કરતા? મારા માતા પિતા મજૂરી કરે છે. તમે સહન કરવા પાછળનું કારણ શું હતું? મારે બીજું ત્રીજું કરવું નતું. હું ગરીબ માતાની દીકરી છું એટલા માટે મેં બધું સહન કર્યું. અને જેમ જેમ હું મારા સાસરે વાળાનો ત્રાસ સહન કરતી ગઈ એમ એ લોકો ઉલટાનો એમનો ત્રાસ વધતો જ ગયો. મને એમ કે પ્રજા પેટ પડશે ને તો એ સુધરશે, પણ ઉલટાનું એ તો કે છોકરો થયો પછી કે તું દુનિયામાં છે કે તારે મારે કાંઈ નહીં.